Hello everyone, welcome to Odia 24/7. पिला माने आज आम डिस्कसन करिबा ASO पई ASO रो किछि ज्योग्राफी क्वेश्चन पिला माने आम आज डिस्कसन करिबा। सो पिला माने टिके मते फटाफट रिप्ले करो, ऑडियो वीडियो सब क्लियर अछि ना नहीं। फटाफट मते रिप्ले करो पिला माने, ऑडियो वीडियो सब क्लियर अछि ना नहीं। देन आम डिस्कसन करिबा आज रो क्लास। प्रशांत कुमार, वेरी गुड आफ्टरनून। प्रशांत ऑडियो क्लियर अछि? फटाफट टिके रिप्ले कर देन स्टार्ट करिबा आज रो क्लास। सो पिला माने आज थॉट कौन रही क्लास स्टार्ट करने पूर्व आज थॉट कौन पिला माने रही। ओके, तन्मय, प्रशांति, प्रशांत समस्त को वेरी गुड आफ्टरनून। पिला माने आज थॉट कौन रही, आज आम क्वेश्चन डिस्कशन करने पूर्व आज थॉट देखि नबा। आज थॉट रही पिला माने सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन डे आउट। कौन आर अर्थ पिला माने सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन इन डे आउट, डे इन एंड डे आउट। माने आमे जो सक्सेस होआ पई चाहूचे जे कोनोसी काम रे पिला आमे गोटे सफलता हासिल करिया पई चाहूचे, आमे जहां भी हमर निहाती हमर किछि एफर्ट दरकार और से एफर्टटा गोटे रेगुलर होबा दरकार। यदि आमे आज एसओ पई प्रिपरेशन करूचे, ये जो एसओ पई प्रिपरेशन करछे आमे आज चिंता करले जे आमे आज प्रत्येक दिन आमे कोन करिवा ना 5 आवर्स पाठ पढिबा एसओ पई। से जो 5 आवर्स पिला माने पाठ पढिबा, ए 5 आवर्स ता मते कंटिन्यू करिया को पडिबो। जदि मु ताको रेगुलर न करिबी ताले मु सक्सेस होई परिबी। रेगुलर मते करिया को पडिबो। सो सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन डे आउट। ओके, ते पिला माने लेट करिवानी, स्टार्ट कर दबा आज क्लास। पिला माने आज फर्स्ट क्वेश्चन रहउची कोन रहउची, हमें ज्योग्राफी क्वेश्चन डिस्कशन करूचे एसओ एग्जामिनेशन पई। प्रथम क्वेश्चन पिला माने रहिची आपण मानक पई, wind in the southern hemisphere is deflected towards left। कोड जाउची towards left due to, आर कारण कोन पिला माने। ओके, टेम्परेचर वेरिएशन, रोटेशन ऑफ द अर्थ, डिफरेंस इन प्रेशर, डिफरेंस इन वाटर कंटेंट। कौन है पारियो पिला माने आंसर टी फटाफट दियो। तन्मय दे सालेनी ऑप्शन बी, सब पिला माने आंसर दियो। सो पिला माने आर आंसर होउची ऑप्शन बी। देखंतु पिला माने आर कारण कोन ना, बिकॉज़ द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, सर्कुलेटिंग एयर इज रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द राइट in the northern hemisphere। northern hemisphere रे क्वाड जाउची राइट को, and towards the left in the southern hemisphere। this direction is called as, ए डायरेक्शन टा को कोन को डायरेक्शन कोंती पिला माने ना कोरियोलिस इफेक्ट कोन कोंती पिला माने याकू कोरियोलिस इफेक्ट मन रखियो। आर कारण होची अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा पिला माने, लोकल थंडरस्टॉर्म्स नॉर्थवेस्टर्स आर प्रोमिनेंट इन डैश, पंजाब, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। कौन हम पिला, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने, क्वेश्चन गुडा का बारंबार एग्जाम रे तुम आसुची, तेणु पिला माने फटाफट टिके मते आंसर दे दियो। फटाफट पिला माने आंसर दियो। लोकल थंडरस्टॉर्म्स नॉर्थवेस्टर्स आर प्रोमिनेंट इन डैश, पंजाब, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। कहि दउची पिला माने आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी माने कौन हैला पिला माने आंसर, वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर। देखो, लोकल थंडरस्टॉर्म नॉर्थवेस्टर्स आर प्रोमिनेंट इन वेस्ट बंगाल। ओ जगह रे पिला माने वेस्ट बंगाल। काला बैसाखी इज ए लोकल रेनफॉल एंड थंडरस्टॉर्म, दे जनरली मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। क्वाड जाए, पश्चिम रु पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट। काला बैसाखी हुए हमर खरा दिन, ए खरा दिन आसी गला, खरा दिन 4-5 बेल को सब बेले पळे आसे काला बैसाखी, जोर वर्षा पवन हुए। तुम मैंने सब जानिच ना नहीं, बहुत जो दिन बहुत गरम होइतिबो से दिन काला बैसाखी हुए ना नहीं। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विंड्स इज इनकरेक्टली पेयर्ड विथ द एरिया इन व्हिच इट प्रिवेल्स। कौन को विंड कोटा इज इनकरेक्टली पेयर,
आपणकर बर्गविंड साउथ ईस्टर्न अफ्रीका, काराबुरान तारिम बेसिन ऑफ सिकियांग, देन आपणकर साउदर्ली वेस्टर्न न्यू साउथ वेल्स, हरिकेन्स न्यूजीलैंड। कौन हम पिला माने फटाफट पिला माने आंसर दे दियो, जल्दी जल्दी पिला माने आंसर दा पे ट्राई करो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विंड्स इज इनकरेक्टली पेयर्ड विथ द एरिया इन व्हिच इट प्रिवेल्स। कहि दोछि पिला माने आंसर, आर आंसर ऑफ ऑप्शन डी। ऑप्शन डी टा कोन, हरिकेन इज ए टाइप ऑफ स्टॉर्म कॉल्ड ए ट्रॉपिकल साइक्लोन which forms over tropical or subtropical water. Okay, only tropical cyclone that form over the Atlantic Ocean or Eastern Pacific Ocean are called hurricanes. But एठी हमर देइथला कोन, न्यूजीलैंड देइथला, तले एटा हबो नै प्लेन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पिला माने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कोन रहउची ना, warm dry winds blowing down the east slopes of Rockies are known as dash। कौन कहती पिला माने? ऑप्शन ए रहउची मिस्ट्रल, ऑप्शन बी नॉर्वेस्टर्स, ऑप्शन सी फोएन, ऑप्शन डी चिनुक। कौन हम पिला माने आंसर फटाफट आंसर दे दियो, जल्दी जल्दी पिला माने ठीक आंसर दे। वार्म ड्राई विंड्स ब्लोइंग डाउन द ईस्ट स्लोप्स ऑफ रॉकीज आर नोन एज डैश। फटाफट पिला माने आंसर दियो, कहि दोछि पिला माने आर आंसर ऑफ ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखंतु वार्म ड्राई विंड्स ब्लोइंग डाउन द ईस्ट स्लोप्स ऑफ रॉकीज इज नोन एज चिनुक। कौन कहती पिला माने? चिनुक कहती। देयर आर टाइप ऑफ वार्म ड्राई विंड दैट occur on the downward slope of a mountain when warm air has lost its moisture। okay, next question पिला माने आमर एसोर गोटे नुआ बैच स्टार्ट होउची मार्च 29 रु पिला माने स्टार्ट होउची। मार्च 29 रु पिला माने गोटे सेक्रेटेरिएट एसओ पई गोटे नुआ अभिप्सा बैच आ गोटे स्टार्ट होउची। पिला माने आर फी रहिची मात्र 2059 रुपीस। ए 2059 रुपीस ऊपर भी पिला माने कोन रहउची ना डिस्काउंट रहउची। जदि आपण कूपन कोड रे यूज करूचंती Y438 बहुत हेल्पफुल हबा पिला माने ए बैच ता तम मानंग पई। तेणु जल्दी जल्दी पिला माने ए बैच रे जॉइन करो आ यूज करो पिला माने Y438 कोड। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने द स्टडी ऑफ द प्रोसेसेस ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज डैश। द स्टडी ऑफ द प्रोसेसेस ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज डैश। आपनकर एस्ट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी, सेसिमोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी कौन हम पिला माने? द स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ एटमॉस्फेयर कौन है परिया पिला माने? कहि दउ मन तर आंसर, आर आंसर होची ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हेले हमर कौन हैला पिला माने ना मेट्रोलॉजी। देखंतु इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच इज कंसर्न्ड विथ द प्रोसेस ऑफ एटमॉस्फेयर that is forecasting weather। Meteorology is the scientific study of atmosphere that focuses on the weather process and forecasting। तले कौन हैला? द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर को हमें कौन कहउचे? मेट्रोलॉजी बोली कहउचे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने जिबा, एजेंट्स ऑफ फॉग इंफॉर्मेशन फॉग फॉर्मेशन डू नॉट इंक्लूड। आपनकर ऑप्शन रहचे हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आपनकर ड्यूरनल टेम्परेचर ऑफ शॉर्ट रेंजेस, विंटर सीजन, रैपिड रेडिएशन। कौन हबा पिला माने? एजेंट्स ऑफ फॉग फॉर्मेशन do not include dash high relative humidity, diurnal temperature of short ranges, winter season, rapid radiation। कौन है परिया पिला माने? जोगेंद्र वेरी गुड आफ्टरनून। फटाफट पिला माने आंसर दियो, मु कहि दउची पिला माने आंसर। आंसर ऑफ ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एजेंट्स ऑफ फॉग फॉर्मेशन डू नॉट इंक्लूड diurnal temperature of short ranges। ओके, diurnal temperature को शॉर्ट रे कहते DTR। तार डेफिनेशन करना इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन डेली मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। ड्यूरनल टेम्परेचर को कहती इट इज द डिफरेंस बिटवीन डेली मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट व्हिच डिस्क्राइब द विद इन डे टेम्परेचर वेरिएबिलिटी एंड रिफ्लेक्ट्स वेदर स्टेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 रहला, व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग फोर्सेस is most powerful in determining movement of wind including its velocity। आपनकर ऑप्शन रहला ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स।
कौन है परिया पिला माने which one among the following forces is most powerful in determining movement of wind including its velocity फटाफट पिला माने आंसर दियो कहि दोछि पिला माने आंसर कोन हबो आर आंसर हबो ऑप्शन डी माने आपनकर कोन हला देखंतु प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स is most powerful in determining movement of wind including its velocity. Okay, wind is the movement of air across the air surface and is produced by differences in air pressure between one place to another, right? Next question पिला मन रहला atmospheric humidity. Atmosphere humidity is measured by कोथरे मपा जाए atmospheric humidity आपनकर रहला साइक्रोमीटर एनीमोमीटर लेसिमोमीटर हाइड्रोमीटर हमर जो atmospheric humidity ता कोथरे मपा जाए पिला माने फटाफट पिला माने आंसर दियो जल्दी जल्दी पिला माने आंसर दे दियो कहि दोछि पिला माने आंसर होछि ऑप्शन ए माने atmospheric humidity is measured by psychrometer. Okay, psychrometer measures humidity by taking both a wet bulb and dry bulb temperature reading. कौन कोथरे मपा जाए पिला माने psychrometer, right? Next question पिला माने question number 9 रहला which is the warmest layer of the atmosphere. atmosphere रा सबुठारु वार्मेस्ट लेयर कोटा आपनकर ऑप्शन रही थर्मोस्फियर ट्रोपोस्फियर स्ट्राटोस्फियर मेसोस्फियर कौन है परिया पिला माने व्हिच इज द वार्मेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फियर थर्मोस्फियर ट्रोपोस्फियर स्ट्राटोस्फियर मेसोस्फियर कौन हबा पिला माने आंसर तबे पिला माने मु कहि दोछि आर आंसर देखो आर आंसर कौन हबो ऑप्शन ए हेले कौन हबो देखो थर्मोस्फियर is a layer of the earth atmosphere. The thermosphere is directly above the mesosphere and below the exosphere. Okay, it extends from about 90 km to between 500 and 1000 km above our planet. Based on the vertical temperature profile in the atmosphere, the thermosphere is the highest layer located above the mesosphere. Okay, तबे पिला मानार आंसर कौन हला सबुठारु वार्मेस्ट लेयर कौन हबो ऑप्शन ए थर्मोस्फियर इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेशली ट्रू ऑफ एंटी साइक्लोन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर. ओके आपनकर ऑप्शन रहिछि द एयर मूव्स इन ए सर्कुलर मैनर प्रेशर इंक्रीजेस फ्रॉम द आउटसाइड टू द सेंटर दे ऑब्टेन फ्रॉम ओवर कंटिनेंट्स द एयर मूव्स इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन है परियो पिला मानार आंसर फटाफट टिके दे दियो कहि दोछि पिला मानार आंसर आर आंसर अब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ऑप्शन डी माने कौन हला आज अर्थ ट्रैवल्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एयर मूविंग फ्रॉम साउदर्न हेमिस्फीयर टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर gets pushed to the right causing hurricanes originating in the northern hemisphere to spin in the counter clockwise direction. Okay, तबे पिला मानार आंसर कौन हला ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन डी माने कौन हला द एयर मूव्स इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 what is approximately the quantum of the pressure exerted by the atmosphere at sea level. So what is approximately the quantum of the pressure exerted by the atmosphere at sea level. आपनकर ऑप्शन रही 1 kg per square meter 1 kg per square meter 1 kg per square centimeter 5 kg per square centimeter 5 kg per square meter कौन हम पिला माने फटाफट टिके आंसर दे दियो जल्दी जल्दी कहि दोछि पिला मानार आंसर कौन हबो आर आंसर हबो आपनकर ऑप्शन बी माने 1 kg per square meter is approximately the quantum of the pressure exerted by the atmosphere at sea level. Option B is the correct answer. Option B आपनकर अछि 1 kg per square meter. Okay, next question को जिबा क्वेश्चन नंबर 12 रही पिला माने व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ हला एटमॉस्फेयर रे केते परसेंटेज नाइट्रोजन अच्छा हम अर्थ रा एटमॉस्फेयर रे आपनकर ऑप्शन अछि 0.94 0.03
78.03 85.02 कौन है परिवो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ फटाफट पिला माने आंसर दिया पिला मान देलेनी ऑप्शन सी सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर आटमोस्फियर रो सबुठारो मोस्ट अबंडेंट गैस होची नाइट्रोजन ये केते परसेंट रहिची ना 78.03%। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 रहिची एट लो एलिवेशन which among the following clouds are to be found at low elevation which among the following clouds are to be found आपणकर ऑप्शन अछि सिरस निम्बस आपणकर क्यूमिरस स्ट्राटस कौन हम पिला मानर आंसर एट लो एलिवेशन व्हिच अमंग द फॉलोइंग क्लाउड्स आर टू बी फाउंड फटाफट पिला मान आंसर दे दियो कहि दोछि पिला मानर आंसर अब ऑप्शन बी देखंतु निम्बो स्ट्राटस clouds typically form at the ground level up to an altitude of about 6,000 feet in the sky. Clouds occurring at ground level are what scientists call fog. Okay, कौन अब पिला माने ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर निम्बोस्ट्राटस पिला माने हमर गोटे एसएससी सीजीएल ओएसएससी ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन तरफ जो सीजीएल एग्जामिनेशन पे नोटिफिकेशन आइची तार गोटे कंप्लीट बैच पिला माने आमे आरंभ करूचु आपणकर एप्रिल 1 रु आमे आरंभ करूचु। ओके तार फी रही पिला माने 1885 रुपीस मात्र 1885 टंका एप्रिल 1 रु पिला माने स्टार्ट होउची आ पिला माने जल्दी जल्दी बैच रे जॉइन कर समस्त एनरोल कर दियो आ ऊपर भी पिला माने डिस्काउंट रहिबो जदि आपण कूपन कोड रे Y438 कोड को यूज करूचंती। ओके गोटे बहुत भल डिस्काउंट पाइबे आ एथिरे पिला माने जल्दी जल्दी एनरोलमेंट कर दियो हैला एटा एप्रिल 1 रु पिला माने स्टार्ट होबा को जाउची। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर इन थंडरस्टॉर्म्स डेवलपमेंट इज डैश मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर in thunderstorm development is dash atmospheric stability atmospheric instability abundance of moisture temperature inversion कौन है परियो पिला मनार आंसर फटाफट टिक आंसर दे दियो फटाफट पिला माने आंसर दियो जल्दी जल्दी आंसर दा पे ट्राई करो तबे पिला माने कहि दउ चार आंसर कोन हबो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर देखो atmospheric instability is the most important factor in thunderstorm development. Okay, surface heating brings about an element of instability in the warm and moist air laying close to the surface. That is why warm and moist air becomes unstable in spring and summer. When it is heated from below, air mass thunderstorm develops in this way. Okay, so pila mane kon hela answer option B is the correct answer. Right, next question को जिबा क्वेश्चन नंबर 15 the intensity of insolation depends on dash का ऊपर डिपेंड करे पिला माने altitude nature of terrain wind latitude कौन अब पिला माने आंसर फटाफट आंसर दियो the intensity of insolation depends on dash फटाफट पिला माने आंसर दे दियो जल्दी जल्दी पिला माने टिके आंसर दा पे ट्राई करो कहि दउची पिला माने आंसर कोन हबो आंसर हबो ऑप्शन डी एले कोन देखो द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन received on the earth surface is far less than that is radiated from the sun because of the small size of the earth and its distance from the sun. Okay, the amount of insolation received on the earth surface is not uniform everywhere. It varies according to the place and time. When the tropical region receives maximum annual insolation, it gradually decreases towards the poles. So insolation is more in summer and less in winter. More कोटी ये हबो more in summer and less in winter. तबे पिला माने आंसर कोन हबो आंसर हबो आपण मानकर ऑप्शन डी latitude is the right answer.
नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 रहला द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज अर्थ र इनर मोस्ट लेयर टाको हमें कोन कहबा लिथोस्फियर मेसोस्फियर आपणकर एसिथेनोस्फियर आपणकर बैरिस्फियर कोन अब पिला माने द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ र इनर मोस्ट लेयर टाको हमें कोन कहउछे पिला माने फटाफट आंसर दियो कहि दउछि पिला माने आंसर अब ऑप्शन डी. ऑप्शन डी डी माने कोन अब बैरिस्फियर देखा द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द कोर और बैरिस्फियर. इट इज अदरवाइज नोन एज द कोन कहंती नाइफ बोली कहंती कोन कहंती नाइफ बोली कहंती ना काहे की ना बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ निकेल एंड फेरस निकेल और फेरस सेते रहउछि बोली ताकू कोन कहंती इनर मोस्ट लेयर टाकू नाइफ बोली कहंती बा ताकू कोन कहंती कोर मा नले बैरिस्फियर बोली कहंती मन रखिबो हैला. नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने evening sun is not as hot as the midday sun. Okay, what is the reason? The reason kon evening sun is not as hot as the midday sun. What is the reason? A reason pila mane kon in the evening radiation travels slowly in the evening the temperature of the sun decreases ozone in atmosphere absorbs more light in the evening radiation travel larger distance through atmosphere. kon hei pariya pila manar answer पिला माने आर आंसर होचे ऑप्शन डी. ऑप्शन डी माने कोन हला द इवनिंग सन इज नॉट एज हॉट एज द मिड डे सन बिकॉज इन द इवनिंग रेडिएशन ट्रैवल लार्जर डिस्टेंस थ्रू एटमॉस्फेयर. ओके, लाइट फ्रॉम द सन near the horizon passes through the thicker layer of air and covers a large distance in the earth atmosphere before reaching our eyes. Okay, however light from the sun overhead would travel relatively shorter distance. Okay, the पिला मानार आंसर कोन हला ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन the water content in the atmosphere. The water content in the atmosphere is dash. आपनकर ऑप्शन रहिछि कोन ना is independent of temperature, increases as temperature increases, decreases as temperature increases, either increases or decreases with temperature increases. कोन हबा पिला माने वाटर कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर कहि दोछि पिला माने आंसर आर आंसर हबा ऑप्शन सी. ऑप्शन सी माने कोन as air temperature increases air can hold more water molecules and its relative humidity decreases. हला बुझियला. नेक्स्ट क्वेश्चन the dry wind Santa Ana blows in कोठी बुले dry wind Santa Ana आपनकर साइबेरिया अर्जेंटीना स्विट्जरलैंड कैलिफोर्निया कोन हबा पिला मानार आंसर फटाफट टिके आंसर दे दियो द ड्राई विंड सांता आना ब्लोज इन डैश कोन हे परिबो पिला माने कहि दउ चार आंसर ऑफ ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. देखो हाई स्पीड एंड डेंजरस ड्राई विंड्स that periodically kick off and blow from the mountains to the coast in southern California are referred to as Santa Ana winds. Okay, ते पिला माने कोन हला आंसर हला आपण मानकर कैलिफोर्निया. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट पिला माने व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ प्लानेटरी विंड. ओके, आपणकर ऑप्शन रहला मॉनसून्स लू वेस्टरलाइज टर्नाडोज कोन हे परिबो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ प्लानेटरी विंड कोन हे परिया पिला मानार आंसर फटाफट टिके आंसर दे दियो जल्दी जल्दी आंसर दा पे ट्राई करो कहि दोछि पिला मानार आंसर आर आंसर ऑफ ऑप्शन सी. ऑप्शन सी माने कोन हला देखो द winds blowing throughout the year from one latitude to another in response to latitudinal differences in air pressure is called the planetary or prevailing wind. Okay, the westerlies antitrades or prevailing westerlies are prevailing wind from the west towards the east in the middle latitude between 30 and 60 degree latitude. Clear? Next question pila mane a sudden fall in the barometric reading indicates a sudden fall in the barometric reading indicates dash हला barometric reading indicates that sudden कमिला तबे कोन हबो रेन हबो ना स्ट्रॉम ना फाइन वेदर ना एक्सट्रीम कोल्ड
कौन हो पारियो पिला माने फटाफट आंसर दियो जल्दी जल्दी आंसर दे दियो कहि दउची पिला माने आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इफ द रीडिंग इज गोइंग डाउन वेरी फास्ट then it's an indication of storm, okay, within 5 to 6 hours, right? Otherwise a slow downfall of reading suggests a low pressure area is passing in a nearby region and it may rain, right? Next question pila mane, the amount of actual water vapor of air is known as the amount of actual water vapor of air is known as आपणकर ऑप्शन है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ड्यू पॉइंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी कंडेंसेशन पॉइंट कौन है पारियो पिला मानर आंसर फटाफट आंसर दे दियो द अमाउंट ऑफ एक्चुअल वाटर वेपर ऑफ एयर इज नोन एज ए डैश ओके एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ड्यू पॉइंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी कंडेंसेशन पॉइंट कौन है पारिबो फटाफट आंसर दियो कहि दउची यार आंसर कौन हबो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ओके the actual amount of the water vapor present in the atmosphere is known as the absolute humidity, okay. It is the weight of water vapor per unit volume of air and is expressed in terms of grams per cubic meter. The absolute humidity differs from place to place on other surface of the earth, right? Next question, precipitation takes place when dash precipitation takes place when dash okay kete bela hue the sky is overcast with clouds temperature of moisture in air suddenly increases temperature of moisture in air sharply decreases winds begin to blow in a circular motion कौन है परियो पिला माने टिके फटाफट आंसर दे दियो जल्दी जल्दी आंसर दियो क्वेश्चन नंबर 23 पिला माने आंसर बा ऑप्शन बी माने आपनकर कोन हला टेम्परेचर ऑफ मॉइस्चर इन एयर सडनली इंक्रीजेस जदि सडनली इंक्रीजेस हबो तबे हबो प्रेसिपिटेशन टेक प्लेस व्हेन टेम्परेचर ऑफ मॉइस्चर इन एयर सडनली इंक्रीजेस ओके precipitation is the falling of water from the sky in different forms okay they all form from the clouds which are raised about 8 to 16 kilometer above the ground in the Earth's troposphere. Precipitation takes place whenever any or all forms of water particle fall from these high levels of the atmosphere and reach the Earth's surface. The drop to the ground is caused by frictional drag and gravity. Okay, option B is the correct answer, pilamane. Next question jiba. Temperate cyclone bring along with them temperate cyclones bring along with them dash आपनकर pleasant weather snowfall and hail आपनकर thunderstorm and torrential rainfall आपनकर mild rainfall कौन हबा पिला माने temperate cyclone bring along with them dash ओके कौन है परिया पिला माने फटाफट आंसर दियो कहि दउची पिला माने आंसर कोन हबो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर देखो टेम्परेट साइक्लोन्स ब्रिंग along with the mid rainfall temperate cyclones also called konta konti mid latitudinal cyclone or extratropical cyclones are formed due to interaction of air masses of different temperature okay next question ko jiba what is the name of the layer above air surface which is located at the height of 8 km from poles and 16 km from the equator को लेयर पिला माने मेसोस्फियर एटमॉस्फियर ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर कौन है परिया पिला माने टिके फटाफट आंसर दियो हाई लेवल क्वेश्चन एई टाइप रो क्वेश्चन पिला माने आसी बरे देखो पिला माने आंसर कौन हबो ऑप्शन सी देखो द अपर बाउंड्री ऑफ द लेयर known as to the tropopause ranges in height from 5 miles near the poles up to 11 miles above the equator okay next question ko jiba which one of the following is the cloud that is dark gray or black found at very low height and brings the real rain कौन हबा पिला मानार आंसर आपनकर अल्टो क्यूमुलस सिरस आपनकर सिरोस्ट्राटस आपनकर निम्बोस्ट्राटस
कौन है पारियो पिला माने व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लाउड दैट इज डार्क ग्रे और ब्लैक फटाफट पिला माने आंसर दियो कहि दउची पिला माने आंसर कोन हबो ऑप्शन डी निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड्स covers the sky in a dark gray layer. They can extend from the low and middle layer of the atmosphere and are thick enough to hold out the sun. Nimbostratus are the quintessential rain cloud. Okay, option D is the correct answer पिला माने. Next question को जिबा. Which of the following is produced by the rapid ascent of most air? आपनकर frost, fog, hail, snow. कौन हबो किए प्रोड्यूस करछि? Which of the following is produced by the rapid ascent of most moist air? कौन हबो पिला माने फटाफट आंसर दियो पिला माने कहि दउ चार आंसर कौन हबो ऑप्शन सी माने कौन हला हेल is produced by the rapid ascent of moist air. The hard pellets of ice having diameter of 5 mm or that fall from cumulonimbus clouds and are generally associated with thunderstorm is known as hail. Okay, they are formed by the rapid ascent of moist air. The water drops freeze and the size of the pellets increases as more water vapor freezes onto their surface. Okay, next question को जिबा पिला माने. Which of the following color type do not indicate fair or fine weather? Which of the following color types do not indicate fair or fine weather? आपनकर ऑप्शन रही सीरस क्यूमुलस अल्टोक्यूमुलस क्यूमुलोनिम्बस कौन है पारियो पिला माने आंसर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कलर टाइप्स डू नॉट इंडिकेट फेयर और फाइन वेदर फटाफट पिला माने आंसर दियो फटाफट पिला माने आंसर दे दियो कहि दउची पिला माने आंसर अब ऑप्शन डी माने क्यूमुलस क्लाउड दैट exhibits significant vertical development okay is called cumulus congestus or touring cumulus. If enough atmospheric instability moisture and lift are present then strong and updraft can develop in the cumulus cloud leading to a mature deep a cumulonimbus cloud that is a thunderstorm producing heavy rain हैला डिटेल्स पूरा एक्सप्लेन कराइछि के पिला माने पढिबा आउ थरे वीडियो देखि करी. नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने द रेडिएशन that hits earth's atmosphere comes from the dash. The radiation that hits earth's atmosphere comes from the dash. आपनकर sun earth ionosphere sun and earth कौन हबो पिला माने कौन हबो पिला माने फटाफट आंसर दियो जल्दी जल्दी पिला माने आंसर दे दियो टिके कहि दोछि पिला माने आंसर हबो ऑप्शन बी माने कोन हला once in the earth atmosphere clouds and surface absorb the solar energy. The ground heats up re-emits energy as long as wave radiation the form of infrared rays. Earth emits long wave radiation because the earth is cooler than the sun and has less energy available to give up. The pilamana answer कौन है ऑप्शन बी means earth is the right answer. Next question pilamane. Next question रहिला why the earth is having its own atmosphere. Okay, आपनकर रहिला winds, clouds, gravity, rotation of the earth. कौन है परियो पिलामने why the earth is having its own atmosphere, winds, clouds, gravity, rotation of the earth. फटाफट पिलामने आंसर दे दियो कहि दोछि पिलामने आंसर हबो ऑप्शन सी माने कोन हला atmosphere contains particles and gases which do not escape to outer space because they are bounded by the force non gravity. कौन ता को जाए gravity. Earth gravity comes from all its masses. All its masses makes a combined gravitational pull on all the masses in your body. That's what gives you weight. And if you are on a planet with less mass than Earth, you would weigh less than you do here. Okay, so पिला माने आंसर कोन हला ऑप्शन सी हला आंसर माने ग्रेविटी इज द राइट आंसर. क्लियर पिला माने प्रतिदिन पिला माने मु 30 टा क्वेश्चन डिस्कशन करी
30टा क्वेश्चन डिस्कशन करी ज्योग्राफी रो रेगुलर क्लास हम समस्ते पूरा जॉइन कर ए 30टा क्वेश्चन को भल भाव पिला माने मन रख बारंबार वीडियो को देखिकी क्वेश्चन गुड़ा को पिला माने मन रख पिला माने तम मानकर गोटे 0 टू हीरो इंग्लिश बैच स्टार्ट होची जोटा कि अभिषेक सार स्टार्ट करूचंती आपनकर मार्च 30 रु स्टार्ट होची पिला माने आउ एटा गोटे इंग्लिश आपण मानकर सबुठी दरकार ठीक अछि तबे पिला माने मात्रार फी रहिछि 1099 रुपीस आ पिला आ ऊपर भी पिला माने डिस्काउंट रहइबो जदि पिला माने कूपन कोड रे आपण यूज करचंती Y438 कोड को तेणु पिला माने जमा भी लेट करंतु नहीं जल्दी जल्दी 0 टू हीरो इंग्लिश बैच रे कोन करंतु ना एनरोल करिकरी पूरा इंग्लिश रे आपण जेंति भलो करिवे सही टाइप रे अभिषेक सर शिखंतु आउ जेते बेले भी ये बैच रे जॉइन करिए पिला माने कोड यूज करिवे Y438 ओके राइट तबे नेक्स्ट पिला माने हमर वर्तमान 17% ऑफ चली मार्च मंथ रे सबु प्रोडक्ट ऊपर तबे पिला माने जो 17% ऑफ चली सबु प्रोडक्ट ऊपर ता पई आपन को कोड यूज करिया पड़े Y438 जेते बेले कूपन कोड रे आपन Y438 कोड को यूज करिवे तबे आपन 17% आडा 24/7 रो सबु प्रोडक्ट ऊपर पाउचंती आ ओडिया स्टेट एग्जाम महापैक जदि आपन ओडिया स्टेट एग्जाम महापैक नउचंती सेते सबु लाइव क्लासेस टेस्ट सीरीज रिकॉर्डेड वीडियो ई बुक सबु आपन पाई जिवे 12 मंथ्स वैलिडिटी रहइबो आउ आपन को यूज आकु नबा पई हेले आपन कूपन कोड रे Y438 कोड को यूज करले सेतरे भी आपन पिला माने गोटे भलो डिस्काउंट पाई ठीक अछि ये थिला पिला माने आपन मानकर आजिरो क्लास केमती लागिला पिला माने तम मानन को आजिरो क्लास केमती लागिला पडापड पिला माने केमती लागिला क्लास रिप्ले करो आ पिला माने ये होची हमर टेलीग्राम लिंक आपण माने हम टेलीग्राम लिंक रे जॉइन करंतु बहुत हेल्पफुल हबो आपण ए टेलीग्राम लिंक रो पीडीएफ पाई परिबे सब जिंस सब लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपण ए टेलीग्राम चैनल ले पाई परिबे आ एटा होची पिला माने मोर मेल आईडी आपण मानकर जहा भी फीडबैक अछि जहा भी किछि शेयर करिया पे चाहउचंती मते मेल करि परिबे ये होची पिला माने आपण हमनकर ब्लॉग लिंक आपण मानक एथरे जाई कि सब जिंस भी आपण जानि परिबे और जदि पिला माने आपण माननको मोर क्लास टा भल लागिला निहाती पिला माने समस्त टिके टिके लाइक करिवे आ कमेंट्स देबे भलो भलो कमेंट्स टिके देबे आ तम फ्रेंड्स माननको भी पिला माने शेयर करिवो जो माने कि देखि कि आ टिके हेल्प हबो से माननको जो माने भी आज नुवा जॉइन करिचो समस्त पिला माने टिके चैनल को सब्सक्राइब करनाबो ठीक अछि तो थैंक यू।